नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए 5वें प्रश्न पत्र प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश 5th यूनिट वोकेबलरी एंड ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। सोहन इज़ अ ब्रेव बॉय। दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। सोहन एक बहादुर लड़का है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द बॉय सेड टू हिज सिस्टर। लड़के ने अपनी बहन से कहा आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा द बॉय सेड टू हिज सिस्टर ही कुडंट हेल्प हर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद चलते हैं जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। ये लास्ट यूनिट है आपकी, इससे 7 नंबर का पूछा जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर? गिव द टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। इट इज एन एनालिटिकल एंड टर्मिनोलॉजिकल स्टडी ऑफ सेंटेंसेज। टाइप्स ऑफ ग्रामर, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्रामर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछे जाते हैं। पर्सपेक्टिव ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, स्कॉलरली ट्रेडिशनल ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर 2 टाइप्स, indefinite article, definite article. A or N is called the indefinite article, the is called the definite article. What do you understand by good reading habit? Good reading habits or good reader is one who has the following qualities. He can read English with accuracy and with correct pronunciation. He can read English with ease, speed and fluency. He may be able to read intelligently and expressively. He can take pleasure while reading. He can read with understanding. What is the importance of teaching grammar? Decide the place of grammar in curriculum. ये भी important प्रश्न है। Grammar is essential for the correct expression of language. Language is a complex system. It must have logic. Grammar is behind it. It gives an insight into the structure of the language. It is systematized knowledge of a language. It provides a certain for judging the correctness of language. It helps in developing mental abilities such as reasoning, observation and concentration. It helps in writing correctly. Place of grammar in school curriculum. In the modern curriculum, grammar is given less importance. With the introduction of direct method, grammar is fast disappearing from school curriculum. Grammar is essential in English teaching because without a knowledge of grammar of the language, one's learning of the language is inadequate. Conscious learning of grammar is slowly converted into a automatic process. The place in curriculum where grammar stands should have the following main features. The descriptive grammar, which emphasis on function of language, should be taught. It should occupy a secondary place. It should be a mean to an end, not the end itself. It should be taught. It should be taught incidentally and informally at early stage. At the middle age, inductive or deductive method is more useful. At the higher level, it can be taught in the traditional method. It should follow the language. Teaching of grammar should be started when people acquire some command over the language. What is sentence structure? Write down the kinds and parts of the sentence. Define the sentence in your own words. A group of words which makes complete sense is called sentence. The sentence are 4 kinds: assertive, interrogative, imperative, exclamatory. Assertive sentence, a sentence that makes a statement or assertion, is called declarative and assertive sentence. Interrogative sentence, a sentence that asks a question, is called an interrogative sentence. Imperative sentence, a sentence that expresses a command, request or order, is called an imperative sentence. Exclamatory sentence, a sentence that expresses strong feeling, is called an exclamatory sentence. Parts of a sentence. Every sentence has 2 parts. The parts which names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence. The part which tells something about
द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद होमोनिम्स और होमोफोन्स की डेफिनेशन आ जाती है कई बार। होमोफोन्स आर द वर्ड दैट प्रोनाउंस्ड द सेम इज अनदर वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग। Homophones spelled the same are called homonyms or homographs. Homophones spelled differently are also called heterographs. इसके बाद define synonym. A synonym is a word having the same or nearly the same meaning as another word or a phrases. जैसे कम का synonym होगा arrive और reach. पर्यायवाची synonym को बोला जाता है। Define antonym. The words having opposite or contrast meaning is called antonyms. Greek word anti means opposite, while onym means name, the opposite name that makes sense. जैसे able, unable, angry, glad, allow, disallow, appear, disappear. इस तरीके से अगर एग्जाम्पल आए सिनोनिम के या एंटोनिम के तो लिख दीजिएगा। What are the determiners? Write 2 sentences using determiners. Nouns either occur alone or with an article. The noun can be preceded by an adjective. In such case, article comes before an adjective. He is a good man. The use of determiner sometimes in place of article we use word like my, this, each, every, etc. Such words are called determiners. जैसे this is my book. तो जो my है इसको यहाँ पर डिटर्मिनर मान लिया जाएगा और इसमें जो आ है इसको डिटर्मिनर माना जाएगा। इसी के साथ ही इस यूनिट के प्रश्न पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले पेपर के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।